एस्पिरेंट्स सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कशन के लिए वो है वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज टेम्परेचर एनॉमलीज विच आर ओवर इंडिया इन दिस मार्च एंड ऑल्सो ग्लोबली। व्हाट आर दीज टेम्परेचर एनॉमलीज, कॉज क्या होते हैं इसके, टेम्परेचर एनॉमलीज मार्च 2023 के लिए क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वार्मर मार्च और इंडिया एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट of this on the local weather of India. After that, we'll be covering our today's prelims practice question, which would be based around this topic. So, March 2023, it has been declared the Earth's second warmest March since the global record keeping which began in the 1850. So, this is the reports have highlighted about this March. What are these temperature anomalies? So temperature anomaly एक मेजर होता है एक्चुअल टेम्परेचर का, और जो लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर होता है वो उससे कितना डेविएट करता है फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड अ टाइम. These anomalies, these are calculated by taking the difference between the actual temperature और जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उस टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस लेते हैं, देन दिस इज एवरेज्ड and this difference over a specific period of time. This is how it is calculated. These anomalies are due to the land, ocean, atmospheric processes, and these processes they dynamically determine the weather and climate of that region. It is a very useful tool and it helps us to understand the changes in the climate over a period of time, as it allows the scientists to compare temperature from different time periods and location at the same time. फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर नॉर्मली +2 डिग्री सेल्सियस का है एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर गिवन ईयर में, इसका मतलब है कि उस रीजन में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हायर है उसके लॉन्ग टर्म एवरेज से. Now, what are the causes of these temperature anomalies? First of all, the cause is the greenhouse gas emissions. Emission of the greenhouse gases such as कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इट हैज़ इंक्रीज रेपिडली क्योंकि व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, एंड इट इज़ अफेक्टिंग द अर्थ्स हीट बजट very effectively, and this is one of the major impact on the global temperature. This is what giving a major impact. Now there is decline in albedo. Albedo is basically the reflective capacity of a surface. The albedo of the earth, which was higher due to the presence of the polar caps, because polar caps are white in color and they reflect back the sunlight which falls on them, and it has declined significantly because the amount of the ice cap or the number of the ice caps is reducing day by day, and this is why albedo is reducing, and this is how the reflective capacity declines and more heat is observed. Now, what is solar activity? So solar activity का कोई major role नहीं होता है global warming में, but still ये temperature profile को influence करेगा, so it will have influence on the Earth's climate. What are the natural factors? Natural factors are like volcanic eruptions. So volcanic eruptions, when they happen, they release a large quantity of aerosols into the atmosphere. They also release gases. So initially it will increase the temperature, but in the long term, when you will see these aerosols, they will cover the Earth's atmospheric layer, and it will have an effect of cooling on the planet. Now, what are the temperature anomalies for March? The map of temperature anomalies here, it shows the distribution of temperature departures from baseline long term average March temperature for March 2023. Here you can observe that here it is India, and in the west side and in the north side there is huge temperature anomaly, and this was the reason that इस बार मुंबई में जो मार्च था it was a little milder, it was little cooler. प्री मानसून एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, अरेबियन सी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है. मोर ओवर इंडिया के उड़ीसा एंड केरला पार्ट में स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स देखी गई थी. Arabian Sea is also warming up at a very fast rate. It will increase the monsoon in this region, but on the long term it will also increase the cyclogenesis. तो यहाँ cyclones भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे. This is a demerit, and the worldwide distribution of the temperature anomalies, this is caused by the land, ocean, atmospheric systems that dynamically influence weather and climate.
Now, global warming, this does not entail that each month or year will be warmer than the preceding month on year. ये global warming का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हर एक महीना warm होता चला जाएगा. एक लॉन्ग टर्म एवरेज में देखा जाता है. Distribution of the temperature anomalies for the March 2023. It is driven of mix by global warming and also by natural variability. The natural variability was El Nino and La Nina effect. What is the impact on India? सो वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगे क्योंकि वार्मर टेम्परेचर है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो इफेक्ट होगा ये सबड्यू हो जाएगा और इसकी वजह से इट विल डिप्राइव द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर द विंटर रेन, जो पंजाब दिल्ली ऐसे इलाकों में होती है. देन प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स. सो रैपिड वार्मिंग जो मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अरेबियन सी की हुई है, इट हैज एनहांस द ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द हीट वेव्स over the India in the pre-monsoon season. Stronger monsoon है, cyclogenesis है, एक warmer Arabian Sea result है weather anomaly का, and it can favor a strong monsoon, but it will also enhance the cyclonic circulation over this Arabian Sea. Stronger monsoons have the potential to produce very heavy rainfalls event over the areas of northwest India and Pakistan as well. Crop damage हो जाएगा इसकी वजह से. एक तो यहाँ पे भी होने के चांसेस है. मोर ओवर रबी क्रॉप्स जो हैं वो रिट्रेटिंग मॉनसून के टाइम अक्टूबर के आसपास के समय पे उनको उगाया जाता है. देन आफ्टर दैट उनको इसी टाइम पे जो ये अभी चल रहा है अप्रैल से मई का महीना, इसमें उनको रीप कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है. बट इफ दिस वेदर एनॉमली विल हैपन एंड देयर वुड बी वार्मर टेम्परेचर्स, इट विल डेफिनेटली लीड टू क्रॉप डैमेज. It will affect the food security and all. What would be the impact on the local weather? So the second warmest March on the record, it can have very significant impacts on the local weather. For example, as mentioned earlier, Mumbai का जो March था, it was a little cooler. Pre-monsoon rains काफ़ी ज़्यादा थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, पंजाब और हरियाणा और इन सब के इलाकों में काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है. केरला उड़ीसा में भी स्कोरिंग हीट वेव्स ऑब्जर्व हुई थी. And these weather anomalies, they will definitely have serious implications for agriculture, water resources and public health as well. Now let's discuss our today's prelims practice question. So question 1, which of the following statement are true for cyclones? Cyclones are centers of low pressure surrounded by closed isobars and having increasing pressure outwards. Cyclones range in the shape of circulars, elliptical to V-shaped. Cyclones have an immense influence on the climate and the weather, all of the above. Second question says temperate cyclones are also termed as extratropical cyclones, wave cyclones, depressions, or all of the above. The answer to this is D, all of the above. This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list.